Hello everyone, I welcome you all in this video series in which we are discussing about the previously asked gate problem on the rolling process. So far we have completed one video, and in that we have discussed about the what are the basic formulas like for the maximum draft or the clearance, bite angle, what is the projected length, what is the projected area. Also we have seen that when we are calculating the force, when this shear stress or the flow stress is given to you, then how we are using that. Okay, and also we have seen we have done three problems. Okay, so in this video we are moving forward from the fourth one onwards. Okay, so let's start. So in this problem, okay, this is asked in GATE 2004. In this problem, in a rolling process, a sheet of 25 mm thickness is rolled to 20 mm thickness. Okay, so initial that H1 is given to you, that is 25, H2 is given to you, that is 20 mm, and roll is of diameter 600 mm. So the value of capital D is given to you, and it rotates at 100 rpm. So the value of capital N is given to you, that is 100. Okay, so we have to calculate the roll strip contact length. Okay, so what is meaning of this? This is basically the projected length. Okay, that we have seen in the last video. So that is equals to R into delta H, where R is equals to R will be the radius of this roller and delta H is the draft. Okay, so delta R, that is given to you, that is diameter, so this will be 600 by 2, that is 300, and delta H will be H1 minus H2. So H1 is 25 and H2 will be 20. Okay, so when you will calculate it, you will get the value like 38.7298. Okay, this values I am getting, but nothing is given to you that is related to this, but so we have to consider the approximate value. So the approximate value will be equals to 39.0 mm. Okay, so this will be option B. Okay, let's move to the next one. This problem asked in GATE 2006. Okay, initially 4 mm thick sheet is rolled with 300 mm diameter roll, means initial H1 is given to you and diameter is 300 mm. Okay, to reduce the thickness without any change in its width, so this is the assumption is given to you, that is width B, that is constant, and the friction coefficient at the work roll interface, that is mu, is 0.10. Okay, so the minimum possible thickness of the sheet that can be produced in a single pass, please keep in mind that is a single pass. So that also we have know that delta H maximum, that is maximum possible draft upon minimum number of passes. Okay, that is equals to mu square into R. So there is a single pass is given to you, so this value, that is capital N will small n we can say, so this is equals to 1. Okay, so delta H will be equals to H1 minus this maximum can be possible when initial value we have to keep in mind, that is constant, so H2 will be minimum as possible. जब ये minimum होगा तो तभी ये जाके आपका मैक्सिमम हो पाएगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर इनटू आर अपॉन 1 है, तो उसको मैं नहीं शो कर रहा हूं. ठीक है, यहाँ पे सो जस्ट पुट द वैल्यू H1, that is 4. Okay, minus H2 minimum. Okay, that is equals to mu square, that is 0.10 square into R. R is how much? Here diameter is given to you 300, so R will be equals to 300 by 2, that is 150. Okay, so when you will calculate this portion, you will get it like 1.5. Okay, so this is 4 minus H2 minimum. So from here you can get the value of H2 minimum. So this will be equals to 4 minus 1.5, so this will be 2.5 mm. Okay, so option will be C. Okay, so this ये जो problems थी, ये in the last video I told you that please do not leave this topic, because there are a lot of problems in which you do not have to use the calculator and you will get the correct answer. So this is the problem that comes under that category only. Okay, तो इससे easy और एक और problem है next one, so उससे easy कुछ हो नहीं सकता है. ठीक है, so you have to work out. So the next problem is the thickness of a metallic sheet is reduced from an initial value of 16 mm
to a final value of 10 mm. So means H1 is given to you, that is 16, and H2 will be 10 mm. Okay, in a single pass, one single rolling pass. Okay, cylindrical rollers we are using, and with having a diameter that is D 400 mm. Okay, so bite angle we have to find out, and so bite angle will be equals to, we know that formula, that is cos alpha equals to 1 minus delta H by D. Delta H is what? H1 minus H2. So H1 and H2 both are given to you. So just put the value, that is H1, that is 16 minus 10 अपॉन D की वैल्यू कितनी है आपका 400. ओके, तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे, सो हाउ मच व्हाट आई एम गेटिंग इज बेसिकली, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 6. सो आई एम गेटिंग इज 0.985. ओके, so ये वैल्यू किसकी है आपकी, cos of alpha की. ओके, so here this will be equals to cos inverse 0.985, so you will get it like 9.936 डिग्री. ओके, और आपको इसमें यहाँ पे किसमें फाइंड आउट करना है, डिग्री में ही फाइंड आउट करना है. ठीक है, so this will be the 9.936, so option will be D. ओके, अगेन इससे इजी भी कुछ पॉसिबल नहीं है. so next problem, this is the toughest problem of this rolling process. okay, in a single pass rolling operation, 20 mm thick plate means initially आपका जो thickness है that is 20 mm with the width of B that is 100 mm is reduced to H2 that is 18 mm. okay, the roller radius that is capital R is given to you, that is 250 mm. rotational speed that is capital N is given to you, that is 10 mm, 10 rpm. The average flow stress that is of the material, that is 300 megapascal. okay, the power required for the rolling operation in the kilowatt is closest to, so that we have to find out. Now ये जो पावर फाइंड आउट करना है, इसके लिए कोई सेपरेट फॉर्मूला नहीं है, बट इट्स लाइक द सेम फॉर्मूला दैट यू आर यूजिंग इन द मशीन डिजाइन. ओके, दूसरी जो चीज है, दैट इज देयर आर टू कंसेप्ट ऑफ द डिजाइन पार्ट. फर्स्ट इज लाइक हाउ वी आर कैलकुलेटिंग दिस पावर इन द मशीन डिजाइन व्हेन वी आर कंसीडरिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द शाफ्ट. P is equals to 2 pi n T upon 60. okay, so same concept we are using over here. okay, now T there is basically the torque, here it also the torque. okay, now how we are calculating this torque? Torque is what? Force into perpendicular distance. okay, तो ये जो है आपका इनिशियली हम लोग मान लेते हैं कि दिस इज द रोलर. ओके, ये आपका रोलर है और ये आपका शीट प्लेट है. ओके, ओके, दिस इज इनिशियली H1 एंड दिस इज H2. नाउ आपका जो मैक्सिमम पॉसिबल है वो इतना रिडक्शन हो सकता है, मींस आपका ये जो थिकनेस है, ये वाला जो पोर्शन है, ये यहां तक आ सकता है, बट स्टिल आई एम यूजिंग दिस वन. ओके, उसका रीजन है दैट आई विल टेल यू मींस अभी बताता हूं मैं आपको. ये आपका O है, दैट इज center of this roller. This is A section and this is B section. okay, or points we can say. Now in this point, as I have already told you that this value, this is which is a bite angle, अल्फा की जो वैल्यू होती है वो ऑलरेडी बहुत कम होती है, जनरली लेस देन 15 और 20 डिग्री. तो ये जो प्रोजेक्टेड आर्क है आपका, दिस इज ऑलरेडी वेरी स्मॉल. ओके, नाउ इन दिस स्मॉल पोर्शन द फोर्स इज लाइक दिस. ओके, और उधर से जो रिएक्शन फोर्स है, दैट इज दिस इज लाइक दिस इज अ रोलर एंड दिस इज द शीट. सो दिस इज लाइक इट इज when this is moving in this direction, so it is because it is decreasing in length, so definitely it will apply some force on it. okay, so it will force it in this direction and it will repel it because it is also not moving from its original position, so it will also apply some reaction force. So that is basically the compressive force, and in this direction it is moving, so it is applying along with that is basically the shear force. okay, तो इस तरह का कुछ कंसेप्ट बनता है, मींस इसमें कंप्रेशन भी है और shear भी है. तो अगर आप मोर सर्फेस का बनाएंगे, अगेन मैं एक चीज और आपका मशीन डिजाइन सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कंसिडर करता हूं, जो आपका 2D में आप जब आप ड्रॉ करते हैं, सो आप कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं. तो ये वाला पोर्शन आप मान लीजिए कि दिस इज द सरफेस ऑफ दिस मटेरियल. ओके, नाउ दिस इज द कंप्रेसिव फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय दिस रोलर एंड दिस इज बेसिकली द शियर फोर्स. ओके, दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दिस flow of this material. okay, now this is basically the shear stress, this is the shear force Fs and this is compressive force Fc. now both जो भी आपका flow stress होता है उसमें आपका दोनों का एक इफेक्ट होता है. ठीक है, तो ये जो फोर्स टॉर्क हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज F इंटू एक्स मान लेता हूं मैं. तो ये जो F होता है दैट इज द इफेक्ट ऑफ बोथ द फोर्सेस.
ओके, किसी एक फोर्स का रीजन नहीं है, दिस इज द बोथ द फोर्सेस आर देयर। ओके, तो जो आपका flow stress है, that is also due to the presence of the shear force as well as the shear force as well as the compressive forces। okay, तो ये जो आपका F है, ओके, नाउ ये जो आपका फोर्स है दैट इज कंप्रेसिव फोर्स एज वेल एज दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, जो भी फोर्सेस आपके लग रहे हैं, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट अगर करेंगे इन अ सिंगल डायरेक्शन, मींस मैं मान लेता हूं कि like basically we have to calculate that part। okay, so either you can assume in this direction, either you can assume in this direction। okay, so I am assuming that it is applicable, it is applying in, we are applying in this direction। okay, वर्टिकली। तो ये आपका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी दैट इज वर्टिकल डिस्टेंस, दैट इज एक्स मान लेते हैं। अब ये जो एक्स है ये आपका जब हॉट रोलिंग होगी और कोल्ड रोलिंग होगी तो उसके लिए कांस्टेंट है, ठीक है। तो हॉट रोलिंग अगर होगी तो दिस विल बी इक्वल्स टू 0.45 into LP, this is for the hot rolling process, and this will be equals to 0.50 LP, that is for the cold rolling process। okay, but these things we have to consider when it is mentioned in the question that whether it's a hot rolling or a cold rolling process। but in this problem it is nothing is given to you that what is the rolling process, so we are just assuming, means whether it's hot or cold, so we are assuming that x will be equals to LP। ओके, मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम ये वाला जो फोर्स है आपका, जैसा मैंने बोला कि हम लोग इतनी थिकनेस कवर कर सकते हैं। ओके, तो मैक्सिमम ये फोर्स कहां तक आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा। ये क्या है आपका प्रोजेक्टेड लेंथ है, तो दिस इज LP, दैट इज प्रोजेक्टेड लेंथ। ओके, सो आई एम जस्ट कन्वर्टिंग दिस P, दैट इज 2 pi n upon 60, और tau t जो की वैल्यू है दैट इज f into x, दैट इज LP I am writing over here। okay, now this p will be equals to again 2 pi n upon 60, f की जो वैल्यू है दैट इज force, so that is flow stress into projected area। okay, so flow stress I am presenting over here, that is tau, that is into AP into LP। okay, तो projected area जो है दैट इज अगेन tau into B, that is width into LP into LP, so this is LP square, I am just writing over here only। okay, so this is LP square। okay, now LP की वैल्यू कितनी है, LP is equals to root square R into delta H। okay, so this will be equals to 2 pi n upon 60 into tau into B into root square or whole square, so this will give you R into delta H। okay, so I'm just putting the value now, 2 pi n, n is what, this is 10, RPM में था तो हमने इसको RPS पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। tau जो है आपका दैट इज 300 मेगापास्कल है, सो मींस न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो मैं आपका 2 mm और ले लेता हूं यहाँ पे, सो mm स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट। ओके, तो B जो है हम उसको mm में रख लेते हैं, B कितना है आपका 100 mm, और R है आपका दिस इज 250 mm। ओके, तो ये कितना बच गया यहाँ पे फाइनली, न्यूटन। ओके, एंड न्यूटन इंटू मीटर पर सेकंड क्या होता है आपका, वॉट होता है, तो मैं इंटू, क्योंकि हमें डेल्टा एच और मल्टीप्लाई करना है तो मैं इसको मीटर में रख देता हूं। ठीक है, सो डेल्टा एच विल बी इक्वल्स टू 20 माइनस 18 इंटू 10⁻³ ओके, अगेन ये जो हमें मिलेगा दैट इज इन न्यूटन into meter per second, so this is basically the watt, but still we have to calculate that is in kilowatt, so I am just again multiply with the 10⁻³ okay, ये आपको कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा ये सारी चीजें, अदरवाइज क्या होगा कि सेम आंसर्स होते हैं तो वॉट एंड किलोवाट में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, देयर मे बी चांसेस ऑफ रॉन्ग, but you have to keep in mind these things। okay, so this will be when you will calculate it, what I am getting is that is 15.7 kilowatt। now again I am not getting the exact value what that given in the options, but still we have to find out that is the closest value, so this will be equals to 15.2। okay, so the option will be A। ओके, इसीलिए मैंने बोला था कि इतने सारे कंसेप्ट हैं, क्योंकि फॉर्मूले को क्या है इलेबोरेट करके लिखा हुआ है एंड देन वी आर जस्ट पुटिंग द वैल्यू, तो इससे ज्यादा टफ हो नहीं सकता। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। दिस इज अ वंडरफुल प्रॉब्लम, बिकॉज इसमें क्या है, इसमें भी कंसेप्ट है। ओके, द मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट इन कोल्ड रोलिंग ऑफ शीट इंक्रीजेस विद, ओके, जो मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट है दैट इज डेल्टा एच मैक्सिमम, वो आपका कब इंक्रीज होगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें ए से A to D नहीं चलते हैं, D to A चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंसेप्ट जो है दैट इज इंक्रीज इन द रोल वेलोसिटी, हालांकि रोल वेलोसिटी का इस पे कोई इफेक्ट नहीं है
तो फिर भी स्टिल मैं आपको कोई एक जो छोटा सा कंसेप्ट है वो मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पे रूलिंग में। ओके, ये आपकी स्ट्रिप है दैट इज इन कॉन्टैक्ट। ओके, नाउ ये जो आपका है दैट इज कॉन्टैक्ट एरिया और द प्रोजेक्टेड एरिया वी कैन से। ओके, नाउ दिस इज ए, दिस इज योर सेंटर O एंड दिस इज पोर्शन योर B। इनिशियली क्या करना पड़ता है हमें कि हमें एक फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। ये आपके दोनों रोलर्स हैं, तो इनिशियली क्या करना पड़ेगा कि इसकी थिकनेस क्या है कि जो आपका रोलर के बीच में डिस्टेंस है उससे थोड़ी ज्यादा रहती है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुश दिस वन इनसाइड दिस। ओके, तो हमें इनिशियली पुश करने के लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ता है। वंस इट इज कंप्लीटली इंसर्टेड, स्टिल this because of this rolling force it is moving in this direction. I mean this is the sheet and this is moving in this direction. Okay, now इनिशियली जो हमें फोर्स लगाना पड़ा कि कब मतलब ये ऑटोमेटिकली लेना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो आपका मटेरियल फ्लो हो रहा है दैट इज, इसकी जो वेलोसिटी होती है इनिशियली वी आर एज्यूमिंग दैट इज VF, दैट इज फ्लो वेलोसिटी, एंड आपका जो ये रोलर है इसकी वेलोसिटी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं दैट इज VR। इनिशियली क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगा रहे हैं तो VF की वैल्यू क्या है, जो भी VR है उससे ज्यादा है। धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे ये इंसर्ट होता जाता है और इसके कांटेक्ट में आता जाता है, नाउ देयर इज सम सर्टेन पॉइंट, okay, that time the value of this VF will be equals to VR, so that point we are calling it as a neutral point, and at this neutral point VF is equals to VR. Okay, this is VF, this is VR. Okay, now before in this A and zone, यहां से लेके यहां तक जो जोन होगा इसमें VF की वैल्यू जो होगी दैट इज ग्रेटर देन VR। नाउ एक बार कांटेक्ट में आ चुका है रोलर के, तो नाउ दैट टाइम इन दिस रीजन एंड बी दिस VR इज ग्रेटर देन VF। ओके, तो ये प्लीज कीप इन माइंड दिस कंसेप्ट, बट स्टिल इस कंसेप्ट का आपका इंक्रीज इन रोलिंग वेलोसिटी, नाउ आप इसको कितना ही इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है, आप इसको कितना ही इंक्रीज कर दीजिए, इसका ड्राफ्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट था वो बताना जरूरी था, इस वजह से बताया मैंने। हालांकि इस कंसेप्ट को यहाँ पे समझाने का पर्पज सिर्फ कुछ नहीं था, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू ब्रीफ यू अबाउट दिस कंसेप्ट ओनली। ओके, बिकॉज मैं इसको और कहीं आगे नहीं कर पाऊंगा, दैट्स व्हाई। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वन के रोल वेलोसिटी का ड्राफ्ट से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो पहला ऑप्शन डी ऑप्शन जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है। नाउ डिक्रीज इन द रोल रेडियस, नाउ उसके लिए क्या है आपका ये फॉर्मूला है दैट इज म्यू स्क्वायर इनटू R अपॉन मिनिमम नंबर ऑफ पासेस। ओके, अब मिनिमम नंबर ऑफ पासेस जो है उसको भी हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, म्यू और म्यू को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, डेल्टा एच एंड R में जो रिलेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आप डिक्रीज करोगे रोल रेडियस को when you are keeping these constant mu and minimum number of passes, so अगर आप इसको डिक्रीज करोगे तो आपकी डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब हमें क्या इंक्रीज पूछा है, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अगर आप इंक्रीज करते आर को तो देयर में भी ये चांसेस टू इंक्रीज द डेल्टा एच। ओके, क्योंकि आप इसको अगर इंक्रीज करोगे, सुन लीजिए कि अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो ये क्या होगा, इनके बीच का गैप कम हो जाएगा, गैप कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच। गैप कम होने से क्या हो रहा है कि इनिशियल आपका H1 तो उतना ही है, H2 की वैल्यू क्या होती जा रही है, वो कम होती जा रही है। तो R अगर इंक्रीज होता तो चांसेस था, बट डिक्रीज हो रहा है तो चांसेस नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी गलत हो गया। Now decrease in the coefficient of friction. Okay, so this is delta H maximum that is equals to mu square into R. Now इसको कांस्टेंट कर दीजिए। Now मान लेते हैं हम लोग एक वैल्यू दैट इज प्रैक्टिकल वैल्यू दैट इज 0.5, इनिशियली आपका 0.5 है, तो म्यू स्क्वायर की वैल्यू जो मिलेगी दैट इज 0.25, मतलब ये म्यू की वैल्यू है, म्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.25। ओके, नाउ मैं इसको रिड्यूस करके 0.20 कर देता हूं, तो म्यू स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिलेगी 0.04। ओके, नाउ दिस वैल्यू 0.04 इज लेस देन 0.25। इसका मतलब अगर आप इसको रिड्यूस करेंगे तो आपकी म्यू स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। अगर ये वैल्यू कम हो रही है तो आपकी डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है, बट स्टिल इसको देख लेते हैं कि ये जो वैल्यू है हम इसको रिवर्स कर लेते हैं कि आपका इनिशियली आपका 0.2 होता तो म्यू स्क्वायर की वैल्यू होती 0.04, ना इसको बढ़ा के आप 0.5 कर देते हैं तो म्यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 0.25। तो यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, म्यू की वैल्यू बढ़ी
तो म्यू स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर म्यू स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो ऑप्शन विल बी ए। Okay, so let's move to the next problem, and this is the last problem for this video. Okay, so in this problem, in a single pass rolling process using 410 mm diameter steel rollers, that is value of capital D is given to you. A strip of width B, that is 140 mm, and the thickness, initial thickness जो है आपका, that is H1 8 mm, undergoes 10% reduction of thickness। मतलब आपका जो फाइनल थिकनेस है दैट इज H2, ठीक है, वो मीन्स 10% रिडक्शन होगा, मीन्स उसके बाद जितना बचता है दैट इज अ पार्ट ऑफ H2। ओके, मीन्स मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि H2 जो है दैट इज जितना बच रहा है दैट इज 1%, मतलब 10% हुआ है तो 0.10, मतलब कितना बचेगा 0.90 इंटू H1। okay, this will be 90% of the H1 will be H2। okay, सो H2 यहां से मिल जाएगा आपको। और एक काम करिए, रिडक्शन बेसिकली क्या होता है, ड्राफ्ट क्या होता है, एक तरह का रिडक्शन ही होता है ना, तो दैट इज विल बी इक्वल्स टू 0.10 इंटू H1। ठीक है, आप इसको यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज डेल्टा H इक्वल्स टू कितना होता है H1 माइनस H2। ठीक है, H1 की वैल्यू कितनी है, H1 तो सेम है, H2 की वैल्यू 0.90 H1, तो यहां से कितना आ जाएगा 0.10 इंटू H1। और वैसे भी ड्राफ्ट, जैसा मैंने यहाँ पे बोला कि ड्राफ्ट और रिडक्शन क्या है, दोनों सेम ही चीजें हैं ना, तो यहाँ पे आप क्या करिए, डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। डेल्टा एच H1 कितना है आपका 8, तो 0.10 इंटू 8, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0.80 mm। ओके, कैलकुलेट करके रख लीजिए, पता नहीं काम आएगा कि नहीं। ठीक है, सो हमें क्या करना है कि एंगल ऑफ बाइट फाइंड आउट करना है। okay, so angle of bite, again same formula, that is cos alpha equals to 1 minus delta h by d। okay, तो delta h की वैल्यू कितनी है 0.80। okay, and d की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे, दिस इज 410। ओके, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यू को, सो यू विल गेट इट, व्हाट आई एम गेटिंग इज दैट इज 0.998। ओके, तो ये वैल्यू किसकी है आपकी, cos ऑफ अल्फा की। ओके, तो अल्फा जब आप इन्वर्स करेंगे cos ऑफ इन्वर्स दैट इज 0.998, सो यू विल गेट इट लाइक व्हाट आई एम गेटिंग इज 3.5798 डिग्री। ओके, ये डिग्री में है, बट आपका आंसर किसमें पूछा है, the angle of bite in radian, so you have to multiply with the pi by 180 degree। okay, pi by 180, so here you will get it, what I am getting is 0.062 radian। okay, this is 0.062 radian, so option will be C। okay, so in this video we are stopping up to here. In the next video we will start from the 10th problem onwards, so thank you so much guys।